کشمیر میں جیسے حالات بدلتے گئے, کافی مطلب ہندو مسلم فساد بھرپا, جب ویسے خراب حالات ہے تب کیا کیا آپ نے؟ تب بھی ہم ایک ساتھ رہے مالک کے ساتھ. ہم کو آپس میں بھائی چارہ ہے, وہ ہم کو ورکر نہیں مانتے تھے, وہ اولاد مانتے تھے, چھوٹا بھائی مانتے تھے. ہم نے بھی اس کا ساتھ دیا, اس نے بھی ہمارا ساتھ دیا. اچھا, وہ نکلے نہیں ہیں یہاں, وہ بھی یہاں ہی رہے, ہم بھی یہاں ہی رہے, کام کرتے رہے, دکان کھولتے رہے, چاہے ہڑتال ہو کچھ ہو. جس دن دکان کھولتے تھے ہم کھولتے تھے بے شک آرام سے. ابھی میں کھڑی ہوں 108 سال پرانے کشمیر میں واقع فوٹو اسٹوڈیو, اور یہ جو فوٹو اسٹوڈیو ہے اس نے جموں کشمیر کی ہسٹری, یہاں کا کلچر, یہاں کی پالیٹکس جو ہے اس کو ابھی تک زندہ رکھا ہے, اور خود یہ ایک ہسٹری کی شکل میں آپ کے سامنے ہے. 1905 میں گورداسپور سے 2 بھائی جموں کشمیر آئے, اور جموں کشمیر کی جو خوبصورتی ہے اس کو وہ کیمرہ میں قید کرنا چاہتے تھے, لیکن وہ خود یہاں کی خوبصورتی دیکھ کر یہاں پہ قید ہو گئے, اور اس کے بعد انہوں نے ایک فوٹو اسٹوڈیو شروع کیا, یہاں پہ نہیں بلکہ ڈل جھیل کے ہاؤس بوٹ کے اندر. اور ساتھ ہی ساتھ جب انہوں نے اپنا پورٹریٹ کا کام یہاں پہ شروع کیا تو لوگ جو ہے فوٹوگرافس کلک کرانے کے لیے ان کے پاس جاتے تھے, تو انہوں نے اپنا جو بزنس تھا وہ سیال کوٹ, راول پنڈی اور پاکستان کے مرری میں بھی اسٹیبلش کیا. اس کے بعد جب پارٹیشن ہوا, اور پارٹیشن کے بعد وہ آؤٹ لیٹس ان کے جو تھے بزنس کے وہ بند ہو گئے, اور یہ والا جو ان کا آؤٹ لیٹ تھا وہ کنٹینیوسلی ابھی تک چل رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ دلی کے کناٹ پلیس میں بھی ان کا ایک فوٹو اسٹوڈیو ہے. یہ جو فوٹو اسٹوڈیو ہے یہاں پہ زیادہ تر جو رائلز ہوتے تھے وہ آتے تھے اپنی پکچرز کلک کرانے کے لیے, اور جو مہتا بردرز تھے وہ ہم کہہ سکتے ہیں ہری سنگھ اور ان کی جو فیملی تھی ان کے بھی پرسنل فوٹوگرافرز تھے. تو اس فوٹو اسٹوڈیو کا کیا اتہاس ہے, کیا ہسٹری ہے, وہ ہم جانیں گے. آئیے اس فوٹو اسٹوڈیو کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طرح سے انہوں نے کشمیر کی ہسٹری کو پرزرو کیا ہے. So we have with us Miss Anita Mehta, जिनसे हम बात करेंगे and we'll try to know about the history of this place. Thank you so much, ma'am, for giving us time. You're welcome. Yeah, can you please tell me about the history of this place? We started Mahata photography in the valley in 1915. Okay. So we were the first ones to start the photography shop. And in those days we only had foreigners like Britishers as our customers, mostly. So they only knew, and we started with glass plates. And the camera, you must be knowing, the one which had to have a sheet on top, yes, and then you could click, and it used to make all those noises, and light flash karti thi and all that. Okay. So that was how we started. And we had this place was a studio earlier. Okay. Where we are sitting now. You have turned it into a cafe. Yeah, now. into a cafe now. Okay. And then by and by things started, picking up. And there used to be, we had old cameras and new cameras, and all the films, and it started with developers, and you had to develop the film and printing. Now of course it's all in mobiles and all. Yeah, exactly. So now photography is like not very amusing, but in those days it was really amusing how it is done. Like in Kashmir, who were the major clients here? In Kashmir we had only Britishers. Okay. And then people visiting the valley, they used to come for portraits. And what about the Maharajas of Kashmir? We were official photographers of Maharaja Hari Singh. Great. So any event happening in their family or darbar or anything, we were always there.
Okay. to click their events and all. So we have lots of Maharaja pictures also, and anything happening in the family or in Maharaja, this thing, we always were there. So we were there to click the pictures. So we were official photographers for them. And how hard was it for you to preserve the aura of this place? It wasn't, I won't say it was hard, but it was like a lot of energy was needed for it to be consumed, and for it to be preserved. And then I was not a photographer by profession, so I was scared also that all these things. Then my children, when they grew up, they took on, and they are also photographers, and they are in Delhi. Okay. At the moment they're there, and they started preserving, digitizing the images, and we get people like from all over the world. My grandmother was portrait was taken by you, and they want to see that, and get the negative and all that. So we are trying to digitize the whole thing, so that anybody who wants to take the get the this thing, the negative, they should not maybe wait for it. So a lot of people came, and they have this nostalgic feeling. Our grandparents came, and you were the ones who took the pictures and all that. And like you had similar studios in Rawalpindi, in Wadi. Yes. What happened to those studios? You see, during partition we had to close them and come back here, and then we opened in Delhi. Then Delhi It's in studio CP, came. right? It's I in have seen CP. it, yeah. Then that because my father-in-law and his two elder brothers, they started all this. So then two of the brothers went to Delhi, and my father-in-law, he stayed here. Okay. So you still have the photo studio upstairs. Yes, you have we this have. cafe also, and We you have have. these pictures that Yes. reveal the history of That's Kashmir. right. So what are your further plans with this? We are trying to make an art gallery, so which we already have an art gallery. There are some exhibitions going on there, but we want to do it like full-fledged. And we will make a photo museum also. And then my children are doing these wallpaper which you can customized wallpaper, which you can give your own portrait, or they'll make it for you, and all those things. We are going to introduce all those here, so that the people of Kashmir can experience and really they can use all those things. Yeah. So one question, like there has been advancement with the kind of poses we do in front of the camera. Yeah. So during early times, in fact, like in the Maharaja, in his family, what kind of poses were they mostly into? The poses were like, mostly I think we believed in very natural poses. It was not made up poses, because the pose, if you see some poses which are made up, you can immediately know, but the natural gives you the good expressions of the person's face and eyes and looks. Only thing which I think was more necessary in the poses was the smile. Smile. Exactly. Yeah. I saw a comparison recently. A photographer, he asked people to smile, Yeah. and then he had put two photos, when they are smiling and when they are not. When they are not and smiling. It made a lot of difference. So smile made a lot of, was very important. How the person is smiling, and especially the focus of the eyes. Yeah. Because So what happened to all those photographs that were taken, or the cameras? Are they still with you? they are still with us. So that's how we are going to make a museum, so that we can tell them that how it started and where it has reached. So from which end to where it goes. It starts from here, like we used to develop these negatives, and then develop the film, and then show the the people,
that you have to choose which picture is nice, which is not nice, and then make prints and how it comes, you know, all those things. Nice. So, and we want the children of today, the youth, to go through this so that they can know what photography was all about. You know, instead of just clicking in your mobile and the picture is there. There's this good thing about this cafe, like I have been to this place like multiple times. Okay. So I always go upstairs and I just check those postcards, come back, eat and go. Yes. And it's like nobody charges us for, you know, getting into that space and dwelling into that history. Yeah. So is it open to students especially, or the young aspiring photographers? Yes, it is. It is. Now, you know, we have had multiple exhibitions in the gallery. There are a lot of children, especially related to art. They are doing very well, and they are being given some certificates so that they feel there is some sense of achievement, and then they feel they've done some good work. Okay. You know, That's otherwise you feel dejected. True. After a while you don't like to do the thing you don't feel if you're not appreciated by somebody or by the media or by the people. So we just want people to get involved into photography. And there's this man upstairs. I think he is the oldest member. He is of the this. oldest member. I Yes. spoke to him and he said like we are carrying this legacy forward. Yes, It used to be yes. like a beautiful experience. That's right. Yeah. Great. It used to be a very good experience. I hope we can retain it to today also. After, you know. Hopefully. Thank you. Yeah. Thank you so much. हमारे साथ अभी महाता स्टूडियो के सबसे पुराने एम्प्लॉय है गुलाम मोहम्मद सूफी। इनसे बात करते हैं और इनका एक्सपीरियंस जानते हैं। सर, मुझे आप बताइए कि आप कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं 1972 से यहाँ काम कर रहा हूँ, लगातार कभी मिस नहीं किया है। 50 साल के करीब मैंने यहाँ फोटोग्राफी यहाँ ही सीखा है, यहाँ भी कर रहा है इस टाइम। अच्छा, तो मुझे बताइए कि तब जो फोटोग्राफी के लिए यहाँ पे क्लाइंट्स आते थे, कौन लोग होते थे ज़्यादा बाहर के आते थे, कश्मीरी भी आते थे। हमको आदमियों की ज़रूरत होता था, फिर लेते हैं। यहाँ बहुतों ने सीखा है, कम से कम 20-30 आदमी यहाँ सीख कर गए हैं। आधे निशात में फोटोग्राफी करे, नेहरू पार्क में करे, आधे ने निचले शहर में अपनी दुकान छोड़े हैं, मगर मैं और दूसरा आदमी हम यहाँ ही रहे, हमने छोड़ा नहीं। अच्छा, कश्मीर में जैसे हालात बदलते गए, काफी मतलब हिंदू मुस्लिम फसाद भरपा, जब वैसे खराब हालात है तब क्या किया आपने? तब भी हम एक साथ रहे मालिक के साथ। हमको आपस में भाईचारा है। वो हमको वर्कर नहीं मानते थे, वो औलाद मानते थे, छोटा भाई मानते थे। हमने भी उसका साथ दिया, उसने भी हमारा साथ दिया। अच्छा। वो निकले नहीं है यहाँ, वो भी यहाँ ही रहे, हम भी यहाँ ही रहे, काम करते रहे, दुकान खोलते रहे, चाहे हड़ताल हो कुछ हो। जिस दिन दुकान खोलते थे हम खोलते थे बेशक आराम से। अच्छा। वो भी अच्छी तरह रहते हमारे साथ। और यहाँ पे महाराजाज जो थे उनके भी फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक होते थे, उनके पर्सनल फोटोग्राफ्स भी थे, तो आपने कभी उनके कुछ फोटोज क्लिक करे? नहीं, महाराजे का मैंने किया नहीं, अलबत्ता एक करण सिंह साहब को किया है मैंने। हाँ। और जितने भी यहाँ वजीर आला बने हैं, मीर कासिम से लेकर ये गुलाम नबी आज़ाद तक या महबूबा मुफ्ती तक, सबका मैंने आउटडोर शूटिंग किया है। अच्छा। उसके अलावा मैंने मिनिस्टरों को जो सेंटर के थे, वजीर आजम थे, सदर थे, उनका भी मैंने आउटडोर शूटिंग किया है। तो अभी जो जिस तरह से अभी हर इंसान के पास कैमरा है, क्योंकि मोबाइल है तो ओब्वियसली कैमरा भी है, तो इस चेंज को किस तरह से आप देखते हैं? चेंज तो बहुत आई है, तरक्की किया ज़माने ने तो, मगर जो पहला फोटोग्राफी था वो एक किस्म का, उसमें कैमरा में रील डालना पड़ता था, फिर एक्सपोजर देना पड़ता था लाइट के हिसाब से, फिर डेवलप करना था। तब आदमी को शांति मिलता था जिसने खींचा होगा, जब वो फिल्म नेगेटिव देखता था, हाँ जी ये सही है, आउट ऑफ फोकस नहीं है, ब्लर नहीं है, कंपोजिंग चाहिए। आजकल जो ये डिजिटल फोटोग्राफी है, ये उधर ही दिखाता है, आंख मत बंद किया है, टेढ़ा है, वो सीधा कर रहा है। बहुत फर्क आई और आसानी आई। इस टाइम फोटोग्राफी चल रही है, उसको डार्क रूम की जरूरत नहीं है, पहले डार्क रूम की जरूरत होती है। चाहे हम स्टूडियो में खींचे या आउटडोर में खींचते थे, तो लाते थे फिल्म, फिर डेवलप करते थे। और दूसरी बात है, अगर मैं आउटडोर खींचता था फिल्म, मैं खुद ही वो डेवलप करता था उसी हिसाब से।
अंधेरे में फिर देखते थे नेगेटिव कैसा है, फिर बनाते थे उसके। ओके, डेवलपिंग स्टूडियो आपका यहीं पे था? यहाँ था, ऊपर था, वर्कशॉप था। हाँ, ऊपर 4-5 कमरे हमारे पास था। कलर का अलग था, ब्लैक एंड व्हाइट का अलग था, और डेवलपिंग का अलग कमरा था। 5-6 हॉल थे हमारे पास, जिसका इस टाइम हमने वो गैलरी बनाया है। अच्छा, और अभी यहाँ पे जो लोग आते हैं वो पुराने फोटोग्राफ जो आपके पास आपने प्रिजर्व किए वो सब देखने के लिए आते हैं? देखने के लिए खरीदते भी हैं, खरीदते भी हैं। बहुत बड़े बड़े उसका ऑर्डर हम लेते हैं, उनसे नेगेटिव से बना के देते हैं, फ्रेम करके देते हैं, तो पैसा लेते हैं तो देते हैं। इसलिए तो रखा है। छोटा तो इस टाइम पोस्ट कार्ड है, वो भी 70-80 साल पुराना है, तो वो भी हमारे पास रिजर्व है और फॉर सेल है। और जो पुराने ये चीज है, केमिकल है, कैमरा है, ये नॉट फॉर सेल, हम बेचते नहीं है। ये रखा है रिजर्व, हाँ रिजर्व करके रखा है। ये सब रिजर्व करके रखा है, हमने संभाल के रखा है। अब चूंकि आपने इतने साल यहाँ काम किया, आपने 90s का दौर देखा जब इंसर्जेंसी थी, हालात खराब थे, अभी तक आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इस फोटो स्टूडियो की क्या अहमियत है आपके लिए? इस अहमियत है, ये तो सब मशहूर स्टूडियो है। एक दफ़ा शायद 2012 में एक ऑल इंडिया टीम आया था, उसने उस टाइम बोला था ये ऑल इंडिया में दूसरे नंबर पर है। पता नहीं आज दूसरे नंबर पे है या फर्स्ट नंबर पे है। और यहाँ के लोगों को थोड़ा कम ही इस स्टूडियो का पता है जितना बाहर के लोगों को पता है। हाँ। एक फायरन इटली की मीम एक दिन आई थी, उसका बाप का तस्वीर साथ था, कहता 1942 में उसने एक खींचा है जिसका मुझे और काफी चाहिए। अच्छा। वो फोटो उसको साथ था। और पिछले दिनों मैंने वो मोबाइल में रखा उस कपल का, उसको 1977 में उन्होंने शादी किया था, तो यहाँ तस्वीर खींचा था, वही ड्रेस उनको साथ था, कहता था और हम यहाँ खींचे, हमने खींचा है। मैं भी हैरान हो गया। उसने वो साड़ी संभाल के रखा, उसने कोट संभाल के रखा, तो उसने लाया वो साथ, उसका लड़का साथ था, तो उसने बोला हमको यहाँ ही खींचना है और एक तस्वीर। अच्छा, नौजवानों के लिए क्या मैसेज रहेगा? नौजवानों का मैसेज है यही कि जिसको सीखना है वो सीखे, और पुराने को भी जरा थोड़ा सा देखे पढ़े, प्रिजर्व करे, पहले क्या फोटोग्राफी है, आज का क्या फोटोग्राफी है। आजकल तो अगर शादी पे जाएंगे तो उधर कम से कम 100 कैमरा खड़े होते हैं मोबाइल के, तो कम से कम उनको पहले देखना था, पहले फोटोग्राफी क्या था, फिल्म क्या चीज थी, कैमरा क्या चीज थी, फोकसिंग क्या था, एक्सपोजर क्या होता था, किस लाइट में खींचना चाहे, कहाँ से खींचना चाहे, वो सीखना चाहे उसको। आते हैं यहाँ स्कूल लड़के जो ये पढ़ते हैं, बाहर के ज्यादा आते हैं यूनिवर्सिटी में से, वो देखते हैं यहाँ, उनको हम बोलते हैं ये चीज पुराना है, ये चीज ये है, ये चीज ये है। पिछली दफा एक ग्रुप आया था। और यहाँ एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ शेखपुरा बड़गामा में, उधर के वो लड़के लाते थे, उधर जो प्रोफेसर उनका है वो लाते थे 20-20, 25-25 लड़का लड़कियों को, और वो भी सब बाहर के होते। कश्मीर में उसमें थोड़ा होता है, अगर 20 लड़के होते थे या लड़कियां होते थे तो उसमें 4-5 कश्मीरी होते थे। अच्छा। बाकी बाहर के होते। वो उनको हम दिखाते हैं यहाँ क्या चीज क्या है क्या है। मैं दिखाऊंगा आपको यास्मीना जी कौन सा कैमरा इस्तेमाल किया है, किन किन मिनिस्टरों को मैंने खींचा है। सबसे पहले ये कैमरा है, ये हम स्टूडियो में यूज करते थे। अच्छा। इसको प्लेट फिल्म लगते थे, पीछे से देखना पड़ता था, फॉक्सिंग करना पड़ता था, फिर आगे को बिठाना आदमी को, फिर उसको ये लोड हो जाता था, इसको ये उठाते थे तो बोलते। अच्छा, इसमें फिल्म लगती थी, इसमें शीट फिल्म लगते थे, प्लेट फिल्म अलग अलग साइज की। साइज इसमें होता था 2B साइज, क्वार्टर साइज, पोस्ट कार्ड 6x4, 8x10 और 10x12, 6 नेगेटिव इसमें लगते थे, 6 किस्म के, छोटा बड़ा बड़ा बड़ा। वो भी हमारे पास है, कौन सा नेगेटिव इसमें है, वो प्लेट फिल्म। यहाँ से मेड इन इंडिया था ये वाला? नहीं, मेड इन इंग्लैंड है। इंग्लैंड है? 1938 में असेंबल हुआ है। 1938 में। और ये आप खुद चलाते थे? खुद चलाते थे स्टूडियो में। और इसको व्हील है आगे, ब्रेक भी था। अच्छा। इसको ऊपर नीचे जिसका था एडजस्टमेंट था, ये बहुत सख्त थोड़ा सा चलाना होता था। अच्छा। तो फिर हमने जब लाया ऊपर ही रखा, अब तो ये फिल्में ही बंद हो गई। ये है कैमरा, ये ज्यादातर मैं 120 में ये इस्तेमाल करता था कैमरा। अच्छा। आउटडोर में, और स्टूडियो में ये करते थे। ये है वो मूविंग कैमरा जो आजकल ये है, मूविंग खींचते थे। इसमें सुपर 8 लगता था फिल्म, जैसे वो सिनेमा को दिखाते हैं, वही कैमरा है।
अच्छा, आजकल जो वीडियो खींचता है ना, पहले यही होता था। अच्छा, ये आप आउटडोर लेके जाते थे ये वाले? नहीं, हम नहीं ये जाते थे आउटडोर, ये रखा है हमने। हाँ, नहीं, खींचते जब आप थे, मेरे shoot से करते- पहले मत खींचते होंगे, ओके। मगर मैंने नहीं इससे खींचा है। हम्म, मगर पता है ये क्या चीज है, इस्तेमाल किया, ट्राई किया है। हाँ, ये हम आउटडोर आउटडोर लेते थे, लेते थे हाँ, और फिर शादियों फोटोज पे यहीं पे डेवलप करते थे। और दूसरा है ये कैमरा, ये लेन हाफ, 1 मिनट में निकालूंगा। ये लेन हाफ कैमरा है, ये बहुत सख्त इस्तेमाल करना पड़ता था, स्टैंड के बगैर ये इस्तेमाल नहीं होता था। अच्छा, ये भारी है, आप देखो कितना भारी है। बहुत ज्यादा हाँ, भारी बहुत है। भारी है, ये स्टैंड पे रखना होता था। हम्म, इसको ये एडजस्टमेंट है, पहले यहाँ से फोकस करो, हाँ, फिर ये डालो, फिर ये निकालो, ख्याल रखना होता था ये हिलेगा मत। अच्छा, अगर ये हिल जाता था तो सारा तस्वीर खराब हो जाता। फिल्म कहाँ से इसमें आप- इसमें आता था फिर, इसमें आता था अच्छा। फिर। इसको भी मैं दिखाऊंगा ना, इसकी फिल्म इसमें जाता था। अरे वाह, यहाँ पर इसको लगाते थे सुकून, ये फिल्म लगता था अच्छा, इसमें। ये यहाँ लगता था, फिर ये आगे घुमाना पड़ता था, फिर इससे घुमाता था, फिर ये बंद करना पड़ता था, अच्छा, अच्छा, फिर इसको फोकस करके ये लगाना पड़ता था इसको। और फिर दूसरी इसमें बात ये है, जिसको जब यहाँ इसको लगाते थे कैमरे को, इसको ये निकालना पड़ता था, ये चीज, अच्छा, ताकि नेगेटिव यहाँ पर आ जाए, अच्छा, वो एक्सपोज हो जाए। हम्म, तो फिर इसको ये डालना पड़ता था। कभी इसको मिस्टेक होता था, ये हम निकालना भूल जाते थे, हाँ, या निकाल के फिर अंदर डालना भूल जाते थे। मगर इसका ख्याल पूरा रखना है, ये निकाला है कि नहीं निकाला है, अच्छा, या डाला है कि डाला है। इसको भी मैंने बहुत इस्तेमाल किया है, मगर आउटडोर में स्टैंड के ऊपर।